Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 10th of December. In this video we will be talking about foreign ministers of Kuwait visit to India. Then we will be talking about Niti Aayog. They have launched a new initiative, that is Trade Watch Quarterly. Right? What this will be? This will be quite interesting and important, and you should pay attention to this. Next thing, we will be talking about a World Bank report that is being talking about the external debt of India that has increased. Then we will be talking about a loan that has been given by Asian Development Bank to India, for what reason and for what amount. Then we will be talking about a new kind of a saving account that has been launched for women by Axis Bank. Next thing, we will be talking about SEBI. They have approved the AMC license for Angel One. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one-stop solution for current affairs. We make sure to upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. Then weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are updated regularly. That will give you a better insight about the day-to-day happenings in the world. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start students with national affairs. We are talking about the Foreign Minister of Kuwait, Abdullah Ali Al Ayaha. As you can see him in the picture here, right? He was a visit into India from 3rd to 4th of December. See, these kind of visits are quite important. During this visit, basically the two countries, right? They sign multiple MOUs, they sign multiple deals, they talk about various critical issues that is going on, right? And it also tends to enhance the cooperation between these two nations. So here we are talking about Kuwait and our India. Correct. In this we can see that Abdullah Ali Al Yaha visited India, and during this bilateral meeting was held with our External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Where was this held? At Hyderabad House in New Delhi. During this they talked about political and trade ties, investment, energy cooperation, food security, cultural and people to people exchanges. Also this will strengthen the understanding and cooperation between these two countries. Apart from this, remember, India and Kuwait, they have also established a JCC, right? That is your Joint Commission for Cooperation. Correct. Second thing, this JCC that has been established, this will basically streamline and will ensure the monitoring of bilateral engagement across various fields between these two countries. This joint commission on the cooperation, right? This will work in sectors such as trade, investment, education, agriculture, technology and so on. What is the capital of Kuwait? It is Kuwait City, right? Next we are talking about Niti Aayog. Take a note of this. This will be quite an interesting topic. See, recently a trade watch quarterly has been launched by Niti Aayog, right? This trade watch quarterly, correct, it is for the first quarter of FY25, that is from April to June month. This is the first quarter, right? So this trade watch quarterly, this report basically talks about the trade that is happening in our country in the first quarter of FY25, right? How much supply was there, what was the demand, right?
what was the performance of various organizations, right? What were the insights that were collected from those emerging trade opportunities, correct? So all these data were compiled, and as per the report, India's total trade performance for the first half of 2024 reached $576 billion with year on year growth of 5.45% compared to that of last year. The report highlighted that the merchandise export showed a growth as exports has increased by 5.95%, right, while the imports also surged by 8.4%. So here you can see what does this second point shows. This shows that now also we know that our country is heavily dependent on import, right? And this data also shows that the amount of imports has significantly increased as compared to that of the exports. Both have increased, but imports increased by 8.4%, whereas exports in the merchandise goods increased by 5.95%. Correct? Take a note of this also. This is important. All this report was released by which organization? Niti Aayog. Who is the chairman of Niti Aayog? The current Prime Minister of India. So Prime Minister Narendra Modi. And headquarter of Niti Aayog, it is in New Delhi. Right? Next thing we are talking about is banking and finance. Recently, World Bank, they have released a report that stated that our countries, that is India's external debt increases by $31 billion to $647 billion in 2023. See, during COVID-19, right, there was heavy printing of money done by USA. Very large amount of USA's dollars were printed, right? It was said that during COVID-19, during 2020, right, almost 20% of the existing supply of dollars were printed. Say for example, if there are $100 in the market, that means in that only in history, if $100 were printed and $100 of supply was there, then in 2020 alone $20 more were printed. So the amount of money in the ecosystem was huge, correct? Now if so much money printing is going on by USA, then there is a high chance, or it will lead to what? It will lead to inflation, and that is the reason USA also increased their interest rate, correct? So that the inflation do not go out of the hand, right? So this is the basic thing you need to remember. Now if this money was printed, correct, so this money was issued to various countries in terms of bonds, right? This was issued to various countries in terms of loans, right? These loans, basically what does they do is, say for example, our country India, our country is a developing nation, right? And we need money in order to come up with various infrastructure projects so that manufacturing can increase, our service sector can increase. For that we need money, right? And for that India tends to borrow money from different countries, correct? And this is the report that is stating that in India, the external debt in 2023, it increased by $31 billion. That means in 2023, we took $31 billion of loan, and now the external debt has increased to a total of $647 billion, right? You can see here a data also that this was your IDR report, that is your international debt report, and we have significantly increased our loan or external debt by $31 billion in 2023, right? Apart from this, remember, as per the report, the long-term debt stocks have increased by 7%. That is your long-term debt stocks have increased by 7% to $498 billion in 2023, whereas the short-term debt stocks, they have decreased marginally to $126.32 billion. Also, this report showed that the external debt stock as percentage of the export was 80%, while the debt servicing was 10% export in 2023. Also, this stated the World Bank, right, they have approved $188.28 million loan to Maharashtra state in order to boost their economy, especially in the underdeveloped districts of the Maharashtra, right? So remember this also, right? Here you can see these things. The report, if we talk about this IDEA 2024, this report is published annually by World Bank,
and this provides the data about the external debt statistics for countries. This latest edition of the report provides in-depth analysis of end 2023 external debt flows and debt stock positions, as well as the macroeconomics and debt outlook for 2024 and beyond. Correct? Take a note of this. If we talk about World Bank, who is the president of World Bank, and he became the first Indian to be appointed as the president, Ajay Banga. Where is the headquarter of World Bank? It is in Washington DC, and World Bank was established in 1944. Next, we were talking about loan, right? So here also you can see India and Asian Development Bank, they have signed a $50 million loan agreement for climate resilient water harvesting in the state of Meghalaya. So Asian Development Bank, they will be providing loan of how much amount? $50 million. This amount will be used for which state? It will be used for Meghalaya. And in Meghalaya too, why this amount will be used for what project? It will be used to enhance the water security, so that better harvesting techniques can be adopted by various communities in Meghalaya. Right here, water harvesting project. This will aim to address water scarcity and improve the agriculture productivity in the state. This project is expected to create project is expected to create better irrigation facilities for 3000 hectares of irrigation or irrigated land, right? That will enhance the agriculture productivity for the farmers. Also, you will be seeing under this, using this amount, 532 small water storage facilities will be set up in 12 districts of Meghalaya state. Right? Who is the Chief Minister of Meghalaya? Conrad K. Sangma. And what is the capital of Meghalaya? It is Shillong. Next, here you can see the things that we just discussed about. Correct? Also here, the project includes the establishment of 50 weather stations for collecting the climate data, right? And it will be in the Garo, Janjatiya, Khasi regions of Meghalaya. Next we are talking about Axis Bank. Axis Bank, they have recently launched a specific kind of saving account, and it has been launched for the women's, right? This will help the women to become financially strong, right? And this name of this bank account or saving account is your Arise Women Saving Account, right? It will empower the women's financially. This Arise Women Saving Accounts, it has been launched by whom? It has been launched by the chairperson and chief executive officer of Salesforce India Private Limited, that is Arundhati Bhattacharya. Correct? Next thing, remember, in this you will be seeing various family banking program, exclusive banking perks will be there, comprehensive health cover will be there, lifestyle benefits will be there. Apart from this card will have a debit card that will offer higher transaction limit with 5 lakh rupees on point of sale and 1 lakh rupees at the ATM machine. This will also provide reward as well as complimentary non-equity option credit card with discounts on various services such as Book My Show and Zomato. Next, if we talk about Axis Bank, who is the Managing Director and Chief Executive Officer? Amitabh Chaudhary, headquartered in Mumbai, Maharashtra, established in 1993. Next is SEBI. SEBI has recently approved Angel One's asset management company, AMC, correct, for mutual fund operation. I repeat, SEBI, they recently approved Angel One Asset Management Company Limited, a wholly owned subsidiary of Angel One, to act as the AMC for the Angel One's mutual fund, which will be specialized in passive investment strategies, right? That means Angel One, we know that this is a broker, correct? And with this Angel One AMC, they aims to deliver a better investment products to the retail investors, right? And here you will be seeing multiple other investment strategies where you will be able to invest in the mutual funds, ETFs, that is your exchange traded funds, index funds, and other options. Correct? Next is awards and recognition. We are talking about the ISSA Good Practice Award for Asia and the Pacific 2024. This award basically is given for what region, right? Why we are given this ISSA Good Practice Award? Okay, before moving on, what is this ISSA? First of all, it is your International Social Security Association. I repeat, International Social Security Association.
Correct. So India, our country, was honored with ISSA Good Practice Award for Asia and Pacific. This award was presented by Dr. Mohammad Azman, the president of ISSA, during a regional social security forum that was held in Saudi Arabia or Riyadh, Saudi Arabia. Right? Take a note of this. Here, our country received this award basically for better social security initiatives that include your communication channels, your various pensioners, correct? Various services that has been launched for various individuals. Also, during this, you can see the Employees Provident Fund organization under the Ministry of Labor and Employment has received 5 certificate of merit for their innovative and inclusive social security initiatives. If we talk about ISSA, we just saw who is the president, Dr. Mohammad Azman, who gave this award to India. Where is the headquarter of this? It is in Geneva, Switzerland, and it was founded in 1927. Correct. Apart from this, if we talk about EPFO, Employees Provident Fund Organization, there are multiple initiatives by them. For example, your communication channel enhancing stakeholder engagement, then e-proceedings, then your Nidhi Aapke Nikat 2.0, multilingual call centers, Prayas prioritizing for pensioners, then your digital life certification, that is your Jeevan Praman Patra, right? So these are some initiatives launched by EPFO. If we talk about EPFO, where is the headquarter? It is in New Delhi. Next we are talking about Turner Prize for 2024. What is Turner Prize? Why this award is given? Turner Prize is basically named after J.M.W. Turner and was celebrated for innovative British artists since 1984. Correct? Then this year, this Turner Prize, as I mentioned, it is given to celebrate the innovation British artist or innovative artists since 1984. Correct. Then if we talk about this award, who received this award? This is the question that will be asked. Who received the prestigious Turner Prize 2024 for thought-provoking exhibition? So as you can see her in the picture here, she is Jasleen Kaur. She is Jasleen Kaur. She is an Indian origin and she has been awarded with this prestigious Turner Prize 2024, and this was for her thought-provoking exhibition by the name Alter Altar. Right? This is the name of the exhibition for which she was awarded here. Apart from this, remember, actor James Norton presented the award to her, as well as a cash prize of almost 26.84 lakh rupees in Indian terms, or if we talk about pound, it was 25,000 pound. Correct. This Alter Altar exhibition, right, it reflects the theme of identity, migration, cultural heritage, right, and for this she was honored with this Turner Prize 2024. Take a note of this, direct question can be asked. Next is ICC, that is your Indian Chemical Council, not the cricket one. Correct. So Indian Chemical Council, they have recently won the 2024 OPCW, the Hodge Award. What is this Hodge Award? This award is given for the contribution towards chemical disarmament. I repeat, ICC was honored with the 2024 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the Hodge Award, for the contribution to the chemical disarmament. That means we won't be using them, right, to avoid the chemical weapons, because they can become very deadly and it can cause a large amount of destruction, right? Even during the time of war, there are multiple chemical weapons that are banned by the international organizations and by all the countries, that during war these chemical weapons should not be used because they are against the humanity, because it is very sad to use these chemical weapons. Correct. So coming back, our country's Indian Chemical Council has been honored with this Hodge Award. Next question can be asked to you students is that what is this Hodge Award, or why this Hodge Award is given? So this is given basically for the prohibition of the chemical weapons. Next we are talking about Forbes India's, correct, recently Octanom Tech has been recognized among the Forbes India's select 200 companies with global business potential. So this Octanom Tech Private Limited, this is a Mumbai, Maharashtra based company,
right? This is a leader in the financial technology innovation, and it has been named to Forbes India's select 200 companies with large global business potential. This was during a summit, that is the D Globalist Entrepreneur Mobility Summit, that was held in New Delhi. Correct? Take a note of this. Next we are talking about appointments and resignation. So, who has been appointed as the new Chief Minister of Maharashtra? That is the 21st Chief Minister of Maharashtra. So, Devendra Fadnavis, as you can see him in the picture here, right? He has been appointed as the 21st Chief Minister of Maharashtra, right? Apart from this, who he will be succeeding? He will be succeeding Devendra Fadnavis will be succeeding whom? He will be succeeding Eknath Shinde. Right? So coming back here, you can see him. He is the Deputy Chief Minister now, and Devendra Fadnavis, he will be the Chief Minister. Right? Very important. Also remember, there are two Deputy Chief Ministers now of Maharashtra, Eknath Shinde and Ajit Pawar. Next we are talking about is acquisitions and mergers. SEBI, they have approved Roshni Nadar's majority acquisition in HCL Tech and HCL Infosystems, right? SEBI, they granted this approval to Roshni Nadar to acquire majority shareholding in two promoter group companies, that is HCL and HCL Infosystems Limited, from her father Shiv Nadar. Now Roshni Nadar will acquire 47% stake in each Vama Sundari Investment Private Limited and HCL Corporation Private Limited, increasing her stake in these companies to 57%. Next is science and technology. ISRO, they have recently launched the ESA's Proba 3 mission to study the sun's corona. I repeat, ISRO, we have successfully launched the European Space Agency's Proba 3 mission. We know, students, that space sector is growing, booming. Now even our country is, for ISRO, one of the major sources of revenue is that they launches various satellites into the orbit, right? Various different countries orbit, right? With this, ISRO is generating huge amount of revenue. You should know this, correct? And taking advantage of that, recently ISRO, they have also launched the European Space Agency's Proba 3 mission. This Proba 3 mission will be basically for studying the sun's corona, and this was launched from where? It was launched from Satish Dhawan Space Center, that is in Sriharikota, Andhra Pradesh. It was launched using Polar Satellite Launch Vehicle XL, correct? Then this was the 61st flight of the Polar Satellite Launch Vehicle C-59 and the 26th with the PSLV XL variant. And this Proba 3, what it will do, it will study the understanding of the sun's corona, that is the outer layer of the sun. Next thing, one more thing. ISRO, who is the chairman of ISRO? S. Somnath ji, headquartered in Bengaluru, Karnataka, right? If we talk about European Space Agency, where is the headquarter of European Space Agency? It is in Paris, France. Can you tell me the Director General of European Space Agency? This is your homework. Next is related to environment. New frog species has been recently discovered in Meghalaya. What is the name of it? Rauchet's asagrinis, right? Rauchet's asagrinesis, right? This is the name of the new frog species that has been recently discovered in Meghalaya. Next is related to sports. Syed Modi International 2024 was held, and PV Sindhu and Lakshya Sen has won the singles title, right? So Indian shuttler PV Sindhu, she also recently got married, right? Or she's about to get married. There was a news in the social media. So PV Sindhu and Lakshya Sen, PV Sindhu has won the women's single title and Lakshya Sen has won the men's single title here, right? During the Syed Modi India International Super 300 tournament that is being held in Lucknow, UP, right? Take a note of this, directly remember. Next, here you can see the winners in men's single Lakshya Sen, women's single PV Sindhu, men's double, women's double and mixed double.
Next is Men's Junior Asia Cup 2024. India has defeated Pakistan to win its fifth title. I repeat, recently, Men's Junior Asia Cup title was held. It was held where location is also important. It was held in Muscat, Oman. This is the location. Next thing, who won this? It was won by our India's men's hockey team, right? Juniors men's hockey team, and we defeated Pakistan in the final by 5-3. This was India's fifth title. Earlier, India has won this title in 2004, 2008, 2015, 2023, and now in 2024. Correct? Here also you can see the player of the tournament, Raijit Singh Hundal, goalkeeper of the tournament, Rafaizul Saini of Malaysia, then leading goal scorer, Sufyan Khan of Pakistan, and rising player of the tournament, Yamato Kawahara of Japan. Next is Obituary. Indian classical musician and sarod player Ashish Khan has recently passed away at the age of 84 in Los Angeles, USA. He was born in 1939 in Madhya Pradesh. He was honored with Sangeet Natak Academy Award, that is your Academy Ratna, the highest recognition for the performing arts. Take a note of this. This question can be asked that who is the individual who recently passed away who was honored with Sangeet Natak Academy Award, that is the Academy Ratna in 2004 for performing arts. So who? Ashish Khan, and he's a sarod player and Indian classic musician. Next is related to important days. We are talking about Indian Navy Day, observed on 4th of December, right? And it is basically observed to recognize the role and achievements of the Indian Navy. This day also commemorates Operation Trident, that was Indian Navy's offensive operation during the 1971 Indo-Pak War. Right? What is the operation? That is your Operation Trident. There is a theme for this day: strength and power through innovation and indigenization. For the first time, this day was observed in 1944. Next is your International Volunteer Day for Economic and Social Development, observed on 5th of December. This day is observed basically to create awareness about the volunteers, right? That people are volunteering for various social development projects, for various social issues, right? And this will promote more volunteerism in order to achieve the sustainable development goals that we have set. Volunteer makes people's part in the solution, and community participation is a different game changer if all the people want to achieve a single cause. This day for the first time was observed in 1985. Right? Next is your World Soil Day. World Soil Day observed on 5th of December, and this day is observed to create the awareness about the importance of soil, because we know in soil almost all the plants are grown, right? And we need to make sure that the soil health is also safe, right? It is healthy, because if we do not conserve our soil also, right, it is conserving a soil is also a different game, right? We should make sure that the health of the soil is important, and that is the reason only we also promote the organic farming. If we keep on adding chemicals, pesticides in the soil, it will become barren, right? It won't be used for very long. But if sustainable practices are implemented, if we are following organic farming, then the soil health will improve. This year it was observed this day is observed on 5th of December, and it was the 11th edition of this day that was observed with the theme Caring for Soil, Measures, Monitor, Manage. This is the theme for this day. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial in your learning. Next, which company has recently become the first NBFC to launch NPCI eKYC Setu system? So which organization has launched this? This has been launched by Housing Development Board Financial Service Limited, right? They have become the first NBFC to launch this NPCI eKYC Setu system. They right, and this system is built in collaboration with NPCI and UIDAI. Next, which payment firm has recently partnered with NPCI Bharat Bill Pay Limited
to launch its BBPS B2B platform. B2B means business to business platform. Correct? It is Paymate. Right? They have partnered with NPCI, Bharat Bill Pay Limited, and they have launched a B2B platform. This aims to serve 636 or 634 lakh MSMEs and 16.6 corporate entities across India. Right, and this platform will facilitate large scale standardization and digitization of the commercial operations such as payments, invoicing, collection across India, and will also promote a better ecosystem for the buyers and suppliers. Next, which of the following has recently become the first major Indian bank to join the partnership for carbon accounting financials, that is PCAF. So first bank is your Union Bank of India, and now it is Punjab National Bank. They have also joined this PCAF framework. Next, which company has recently launched its signature increasing income plan to offer growing income streams for the retirees? So, which organization, which insurance company? It is Aviva in Life Insurance Company Limited. And this plan is designed to help the customers maintain their purchasing power in retirement and keep up with the inflation. Next, which insurance company has recently entered a bancassurance partnership with CSP Bank Limited to offer a wide range of life insurance products? So, which is it? It is your Max Life Insurance Company Limited. Correct? Bancassurance, basically what is this? Bancassurance is a partnership between a bank and an insurance company. Which is the insurer bank here? CSB Limited, and insurance company here is Max Life Insurance Company Limited. Next, RBI, they have recently reported that the small saving plans have grown, or these small saving plans, they have grown by how much percent? Up to Feb 2024, reaching 18.1 lakh crore rupees. So they have grown by 13.8%. Correct? And remember this. Next, one more thing, remember here, Sukanya Samriddhi Yojana and Senior Citizen Savings Scheme, they have seen the highest growth among all the saving schemes with a 41% growth. Next, which bank has recently announced a strategic partnership with DMI Finance Private Limited to offer a co-branded credit card to DMI Finance existing customers? So it is RBL Bank Limited. Next, which company has recently received final authorization from RBI to function as an online payment aggregator? Which is it? So which company got this online payment aggregator license? It was Pay Global Technologies Private Limited. Right? With this authorization, Pay Global can now officially onboard the merchants, offer various secure, efficient and seamless payment processing for the businesses. Next, which ministry has recently relaxed norms for the expenditure exceeding 500 crore rupees to boost the capital expenditure, that is your capex, that is estimated at 11.11 lakh crore rupees for the financial FY25? So which is it? It is Ministry of Finance. Next, RBI, they have clarified that overseas citizens of India card holders, that are OCI card holders, now are eligible for education loan from Indian banks as long as they are residing in India. These banks that can provide the, or these Indian banks that can provide the loans are SBI, HDFC Bank and ICICI Bank. Next, Bharti Airtel has recently launched a fixed deposit service under its digital finance arm, Airtel Finance, by offering interest rates of up to how much percent? Up to 9.1%. Next, with which housing finance company did the US International Development Finance Corporation signed a $50 million loan agreement to expand mortgage and home lending in India? It is Vastu Housing Finance Corporation Limited. Next, which company has recently secured 7.2 billion rupees funding from Asian Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank for electric bus services expansion in India? So from which organization? It is JBM Ecolife Mobility Private Limited. Right? We received $7.2 billion funding. This company has received this 7.2 billion rupees funding from Asian Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank, and this is basically to enhance the electric bus services in India. Next, students, is our homework section. Today is a different kind of homework, students. Today you tell me which are the 3 important current affairs that you have learned last week, as well as give me one topic
that you haven't understand and you want me to revise that topic, right? So give me that topic in the comment section. So these were your important homework questions. So do hit the like button. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 10 दिसंबर के हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आज का हमारा, राइट? एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत ने इंडिया को विजिट किया, काफ़ी सारे एमओयूज़ यहाँ पे एंड डील्स पार्टनरशिप साइन हुई। इसी के साथ हम बात करेंगे ट्रेड वॉच क्वार्टरली, ये एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है नीति आयोग के द्वारा, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली, कितने % की बढ़ोतरी देखने को मिली। देन इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी एक अभी लोन लिया है, किस चीज़ के लिए लोन लिया है, कहाँ के लिए लोन लिया है, उससे क्या प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एक्सिस बैंक के द्वारा वीमेंस के लिए एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है, क्या वो सेविंग अकाउंट रहेगा। देन सेबी ने अभी किसको अभी अप्रूवल दिया है फॉर म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स। अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। बहुत ही अच्छा टॉप नॉच कंटेंट हम आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड हो जाती है। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज हम रेगुलरली अपलोड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आए। टॉप नॉच से टॉप नॉच कंटेंट हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहें। एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे पढ़ाते हुए, एंड आई कैन फुली से कि आप हमारी वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए एंड क्विज को अटेंड कीजिए। एंड आपका एग्जाम में पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जो भी करंट अफेयर्स एंड जीएस के क्वेश्चंस आएंगे, आप यहाँ से हमारे ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर्स से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने अभी इंडिया में विजिट किया। क्या कौन है ये? अब्दुल अली अल यहान। आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। इन्होंने अभी इंडिया में विजिट किया और इनकी विजिट के दौरान हम देखेंगे कई सारी यहाँ पे डील साइन होती हैं, राइट। कई सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाती है, ट्रेड को फ्लरिश करने के ऊपर बात की जाती है, पॉलिटिकल टाइज की जाती है, देन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात की जाती है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे बात की गई, कल्चर एक्सचेंज कि एक दूसरी कंट्रीज़ में लोगों का आवाजाही हो सके, हमारे इंडिया से स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जा सकें, वहाँ पे जॉब कर सकें, वहाँ से लोग यहाँ पे इंडिया में आ सके, बेशक वो ट्रैवल के लिए हो या स्टडी करने के लिए हो, राइट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया और यूएई के इंडिया एंड कुवैत के बीच में एक एमओयू साइन हुआ ताकि एक जेसीसी को इस्टेब्लिश किया जा सके। जेसीसी क्या है? जॉइंट कमीशन फॉर कॉपरेशन। ये जो जेसीसी है बात करेगी आपकी ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे, फूड सिक्योरिटी पे, कल्चर पे, एग्रीकल्चर पे, राइट। इन सब के ऊपर यहाँ पे काम करेगी ताकि एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ सके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की। नीति आयोग के द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 की रिलीज की गई है। ये आपकी कब से कब तक होता है? फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से लेके जून के महीने तक। अब देखो, ट्रेड वॉच मतलब ट्रेड को वॉच किया जा रहा है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब कितना ट्रेड हुआ हमारा, कितनी डिमांड थी ट्रेड की
हमारे प्रोडक्ट्स की, कितना हमने सप्लाई करा, कितना हमने इंपोर्ट करा, कितना हमने एक्सपोर्ट करा, क्या हम चीज़ों में ग्रोथ ला सकते हैं, किन चीज़ों की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ की गई। अगर हम देखें इस रिपोर्ट में एक डाटा रिलीज़ किया गया कि जो टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस थी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 वो $576 बिलियन टच कर गई विद एन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 5.45% कंपेयर टू 2023। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है, अगर हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें हमें ग्रोथ देखने को मिली है 5.95% की, राइट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें मर्चेंडाइज इंपोर्ट की, उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली और वो ज़्यादा ग्रोथ है, वो है 8.4% की। एंड आप जानते ही हैं कि इंडिया एक इंपोर्ट डोमिनेंट देश है हमारा, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं जितना हम एक्सपोर्ट नहीं करते। इससे क्या होता है कि इंडिया में सरप्लस जो पैसा, अगर मान लो ट्रेड से हमने कुछ डॉलर्स कमाए, वहाँ पर वही डॉलर्स हमें एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि सॉरी हमने एक्सपोर्ट्स किया कुछ और डॉलर्स कमाए, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं हमें उससे ज़्यादा डॉलर्स इंपोर्ट में देने पड़ते हैं, क्योंकि हमें दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कराना है, राइट। और यही यहाँ पे हमें डिफरेंस भी देखने को मिला कि जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो हुआ, डेफिनेटली ग्रो हुआ, लेकिन जो इंपोर्ट की अमाउंट है वो ग्रोथ की वो ज़्यादा हो गई, मतलब हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं अपनी जो हमारी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक, मार्क करके चलेंगे इसको। इसी के अलावा फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ना वो 31 बिलियन डॉलर से बढ़ गया 2023 में, और जो टोटल हो गया 2023 में डेट वो है 647 बिलियन डॉलर का। देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। अभी हमने पीछे देखा कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कराते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, राइट, मतलब हमारे पास सरप्लस पैसा नहीं हो पाता। इसके लिए हमें डेवलपमेंट चाहिए। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हमें पैसा लोन पे लेना पड़ेगा दूसरी कंट्री से। आप देखते होंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना लोन दिया, अभी इवन हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पे मेघालय में किस चीज़ के लिए लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। हम देखते हैं अलग अलग स्टेट्स में, कभी महाराष्ट्र को, कभी तेलंगाना को, कभी झारखंड को, कभी ओडिशा को, कभी कहीं पे लोन मिलता रहता है। तो वो जो लोन अमाउंट होता है ना वो एक्सटर्नल डेट होता है, वो हमारे यूज़ किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, राइट, ताकि जॉब्स क्रिएट की जा सकें, ताकि सर्विसेज क्रिएट की जा सके, ताकि एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाके, इकोसिस्टम बनाया जा सके, जिससे हम पैसा निकाल के हम ये इंटरेस्ट भी पे कर सके, इस लोन को भी पे कर सके, एंड इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, राइट। तो वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 31 बिलियन डॉलर से 2023 में एक्सटर्नल डेट इंडिया का बढ़ता हुआ दिखा, और जो टोटल डेट हो गया वो है 647 बिलियन डॉलर का। यहीं पे एक और चीज देखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल जो आपका अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट स्टॉक्स की, तो वो भी 7% से बढ़ गए टू 498 बिलियन इन 2023। अगर मैं शॉर्ट टर्म डेट स्टॉक्स की बात करूं, इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, ये है 126.32 बिलियन डॉलर के, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज याद रखेंगे, अभी वर्ल्ड बैंक ने, जैसे मैंने बताया लोन की बात चल रही है, तो वर्ल्ड बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट के लिए 188.28 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव करा है, ताकि जो महाराष्ट्र की अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट की, उनको उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो ये है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट कौन है जो कि इंडिया के पहले इंडियन बने जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, वो हैं अजय बंगा। हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है इनका हेडक्वार्टर, एंड 1944 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी हमने लोन की बात करी, राइट। तो इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक डील साइन हुई, जहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया को 50 मिलियन डॉलर का ये लोन देगा फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर हार्वेस्टिंग। कहां पर? मेघालय में। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया ना, 50 मिलियन डॉलर का लोन, इसमें हम देखेंगे कि 3000 हेक्टेयर्स लैंड को यहाँ पे इरिगेशन के लिए बनाया जाएगा, कि वहाँ पे उसको इरिगेट करके हम जो फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकें। यहीं पे हम देखेंगे 532 स्मॉल वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ को सेटअप किया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट में मेघालय की, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके यहाँ पे, एंड जरूरत पड़ने पे उसको यूज़ किया जा सके। इससे हम देखेंगे 50 वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे, 50 वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे, एंड ये स्टेशन आपका
क्लाइमेट का डाटा कलेक्ट करेगा, राइट, एंड बेटर इरिगेशन सिस्टम्स वहाँ पे सेटअप किए जा सकेंगे इस डाटा के इनसाइट से, जहाँ पे गारो जनजातीय खासी रीजन्स जो ट्राइब्स हैं मेघालय में, उनको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड के संगमा। कैपिटल क्या रहेगी मेघालय की? शिलोंग, राइट। एंड अगर मैं एशियन डेवलपमेंट की बैंक की बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुगु असकावा। हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में, एंड 1966 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। एंड 69 मेंबर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। चलिए मूविंग ऑन, फिर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक के द्वारा अभी एक सेविंग अकाउंट लॉन्च करा गया है जो कि वीमेन सेंट्रिक रहेगा। वीमेन सेंट्रिक रहेगा तो मतलब वीमेन एम्पावरमेंट पे ये फोकस करेगा, वीमेंस को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये अराइज वीमेन सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया एक्सिस बैंक के द्वारा। यहाँ पर आपकी बहुत सारी पर्क्स देख से, जीरो लोकर फीस मिलेगी पहले साल के लिए, राइट, लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। यहीं पे आप देखेंगे अराइज डेबिट कार्ड मिलेगा जहाँ पे आपकी 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन की लिमिट रहेगी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस पे, एंड एटीएम्स पे 1 लाख रुपए तक की लिमिट देखने को मिलेगी। ठीक है। एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं तो एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो है अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा एक्सिस बैंक का? मुंबई, महाराष्ट्र में, एंड 1993 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। फिर आ जाते हैं एक और न्यूज़ पर जो है सेबी ने अभी अप्रूव करा है एंजल वन एएमसी को कि वो म्यूचुअल फंड ऑपरेशन में घुस सकते हैं, राइट। जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल का देखा होगा, आपने आईसीआईसीआई का देखा होगा, टाटा का देखा होगा, एसबीआई का, एचडीएफसी का। सिमिलरली एंजल वन जो एक ब्रोकर है, इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अब ये म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस में आ सकते हैं जहाँ पे ये म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करा सकते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, आपके थीमेटिक बेस्ड हो सकते हैं, ये ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब इनके लिए एक और सेगमेंट ओपन होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पर। इंडिया को अभी ऑनर किया गया है आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024 के लिए। ये आईएसएसए क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, राइट। इनको हमारी कंट्री को आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशियन पैसिफिक से सम्मानित किया गया, राइट। यहाँ पे कि मतलब हम अपनी जो सोशल सिक्योरिटी है, जैसे पेंशनर्स के लिए, राइट, बहुत अच्छी सर्विसेज लाते हैं। जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी पेंशन मिलती है, राइट, वो बहुत अपना जो रिटायरमेंट पीरियड है बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। देन इंडिया के द्वारा ईपीएफओ लॉन्च किया गया था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसके अंडर भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, बहुत सारी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। जैसे अगर ईपीएफओ के अंडर हम बात करें, ई प्रोसीडिंग्स, निधि आपके नेकेट 2.0, देन मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर्स लॉन्च किए गए थे, देन जीवन प्रमाण पत्र जो कि है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, वो लॉन्च किए गए थे। काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च की गई थी। एंड इंडिया के ही इस एफर्ट को ऑनर करने के लिए आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक से सम्मानित हमारे देश को करा गया है। आईएसएसए के प्रेसिडेंट कौन है? वो है डॉक्टर मोहम्मद अजमान। हेडक्वार्टर रहेगा इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं टर्नर प्राइज की। टर्नर प्राइज बेसिकली ये अवार्ड दिया गया अभी एक थॉट प्रोवोकिंग एग्जीबिशन के लिए जिसका नाम है ऑल्टर अल्तार, राइट। एंड ये जो ऑल्टर अल्तार एग्जीबिशन था ना, ये जसलीन कौर के द्वारा सेटअप किया गया था। ये इंडियन ओरिजिन है, राइट। ये सेटअप किया गया था एंड इस एग्जीबिशन के लिए ही यहाँ पर जसलीन कौर को इस टर्नर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। अगर यहीं पे बात करें, इनको सम्मानित किया गया इस टर्नर प्राइज से, राइट। इसी के साथ साथ 25,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इनको दिए गए, जो कि 26 लाख के करीब, 27 लाख के करीब इंडियन रुपीस में कैलकुलेटेड होते हैं, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आईसीसी। ये क्रिकेट नहीं है, हम बात कर रहे हैं इंडियन केमिकल काउंसिल की। इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे बच्चे। अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को हॉज अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हॉज अवार्ड क्या है? बेसिकली कि केमिकल वेपन्स का जो यूज़ है ना, उसको प्रोहिबिट किया जाए, केमिकल वेपन्स को यूज़ ना किया जाए। हम जानते हैं वर्ल्ड में अभी वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं, राइट। काफ़ी जगह वॉर्स चल रही हैं, तो इन वॉर्स में केमिकल वेपन्स का यूज़ ना हो सके एंड केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने के लिए ही ये
इंडियन केमिकल काउंसिल को सम्मानित किया गया है हॉज अवार्ड से। एंड ये हॉज अवार्ड भी है आपका 2024 का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हॉज अवार्ड। करेक्ट। इसका 29वां सेशन हुआ था ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, जो कि हॉज नीदरलैंड में हुआ था, एंड इसीलिए इसको हॉज अवार्ड कहते हैं। एंड इंडियन केमिकल काउंसिल को इससे सम्मानित किया गया कि इनके जो एफर्ट्स हैं कि हम केमिकल वेपन्स को प्रमोट ना करें। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं ऑक्टेनम टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये एक लीडर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फर्म है, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड। ये नेम की गई इन द फोर्ब्स इंडिया सेलेक्ट 200 कंपनीज विद लार्ज ग्लोबल बिजनेस पोटेंशियल। मतलब इनका काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने का, राइट, इनकी नई पार्टनरशिप्स के लिए, राइट, इनके नए प्रोडक्ट्स के लिए, राइट, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट 200 कंपनीज विद ग्लोबल बिजनेस पोटेंशियल के अंडर ऑक्टेनम टेक को रिकॉग्नाइज किया गया। मूविंग ऑन, फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन आ जाती हैं। अभी हमने देखा था महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे, राइट। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर बने हैं देवेंद्र फडणवीस, राइट, मार्क करके चलेंगे। ये 21वें चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, राइट, बीजेपी से ये बिलोंग करते हैं। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने, वो हैं एकनाथ शिंदे, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे। ये वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, एज वेल एज अजीत पवार, राइट, इन दोनों को यहां पे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, मार्क करके चलेंगे इसको। चलिए मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। सेबी ने अभी अप्रूव किया रोशनी नादर की मेजॉरिटी स्टेक एक्विजिशन इन एचसीएल टेक एंड एचसीएल इन्फो सिस्टम्स। ये अपने फादर से, राइट, शिव नादर जी से ये स्टेक एक्वायर करेंगी, राइट, और इनका जो स्टेक है 47% ये यहाँ पे एक्वायर करेंगे, और अब इनका स्टेक बढ़ के 57% हो जाएगा, ये मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसरो, देखो इसरो का ना आप एक चीज समझिए, इसरो का वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू जो है ना, जिससे इसरो पैसा कमाता है, वो है कि हम दूसरी कंट्रीज की सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, राइट। उससे हमारे पास काफी रिवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि वो तो डॉलर्स में, पाउंड्स में पे करते हैं, एंड इंडिया में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। तो इसरो ने अभी ऐसा ही एक लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जो कि है प्रोबा 3 मिशन। ये प्रोबा 3 मिशन सन की आउटर लेयर, जो कि कोरोना, उसको स्टडी करने का काम करेगा। इसको लॉन्च किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी एक्सेल वर्जन रॉकेट की मदद से, राइट, मतलब पीएसएलवी रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि है एक्सेल वेरिएंट, उससे इसको लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको यहां पे लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर एनवायरनमेंट पर हम बात कर रहे हैं नई फ्रॉग स्पीशीज, जो कि है रॉशेट्स असाक्रेग्रेनिसिस, राइट। ये अभी मेघालय में डिस्कवर की गई है, तो डायरेक्टली इसका नाम याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 का। यह भी हमें देखने को मिला इवेंट, एंड इस इवेंट के दौरान किन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता और किन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता। उससे पहले एक और चीज याद रखेंगे, ये इवेंट हुआ कहां पर था, तो ये लखनऊ यूपी में हमें देखने को मिला था, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024, राइट। एंड यहाँ पे किन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता, वो जीता लक्ष्य सेन ने। वीमेन सिंगल टाइटल पीवी सिंधु ने। मेंस डबल, वीमेंस डबल, मिक्स डबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेन ये दो चीजें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इवन अभी पीवी सिंधु की शादी की भी न्यूज यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी चल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंस जूनियर एशिया कप 2024 की। इंडिया ने अभी पाकिस्तान को हरा दिया है टू विन देयर 5th टाइटल, मतलब 5वीं बार इंडिया की मेंस जूनियर टीम ने यहाँ पे मेंस जूनियर एशिया कप को जीता, राइट। 2004, 2008, 2015, 2023 और अब 2024 में भी इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया ने किसको हराया फाइनल्स में? पाकिस्तान को हराया। 5-3 से यहाँ पे इवेंट हमने जीत लिया है। यहीं पे अगर मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? अराईजीत सिंह हुंडल इंडिया के। गोलकीपर कौन थे टूर्नामेंट के? रफाइजुल सैनी मलेशिया के। लीडिंग गोल स्कोरर सुफियान खान पाकिस्तान के। एंड राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यामातो कावाहारा जापान के। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स ऑब्यूटरी पर। इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड सरोद प्लेयर आशीष खान, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 84, राइट। LA USA में इनका निधन हुआ। इनका जन्म 1939 में हुआ था मध्य प्रदेश में। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2004 में, जो कि हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। इंडियन नेवी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 दिसंबर को, ताकि इंडियन नेवी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सेफ्टी में, हमारे नेशन की सेफ्टी में, उस डे को उसको ऑनर करने के लिए यही डे कमेमोरेट करता है, राइट। ऑपरेशन ट्राइडेंट को भी, ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, ये इंडियन नेवी का ही एक ऑपरेशन था। 1971 इंडो पाक वॉर जो हुई थी उसके दौरान ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, राइट। यहीं पे इसकी थीम याद रखेंगे इस बार 2024 की, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। 5 दिसंबर को यह डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड किसी भी फील्ड में अगर एक कॉज की तरफ बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स काम करते हैं तो वो काम इजी हो जाता है एंड अच्छे से वो काम ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, राइट। इसीलिए वॉलंटियर्स का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वॉलंटियर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ इनका रुझान ले जाना कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स इन फील्ड्स में, इन जो थीम्स हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, इसके तरफ काम करें। इस डे को पहली बार 1985 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। सॉइल की जो इंपॉर्टेंस है हमारी दुनिया में, क्यों, क्योंकि सब कुछ इसी में ग्रो किया जाता है, सारे फूड हमारे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट। एंड सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो इरोड हो जाती है, राइट। उसको वो बंजर हो जाएगी एक टाइम बाद अगर उसकी हमें सॉइल की हमने हेल्थ की ध्यान नहीं रखा, राइट। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा मेथड है कि वो सॉइल हेल्थ उसमें बहुत अच्छी रहती है एंड हमारा जो प्रोड्यूस है वो भी एक टाइम बाद, 2-3 साल लगते हैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि बेटर प्रोड्यूस मिले, लेकिन 2 से 3 साल बाद आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट है ना वो आप रीप करेंगे। हमारी सॉइल की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है एंड बहुत अच्छा हमें प्रोडक्ट मिलता है, फूड मिलता है, राइट, जिसका न्यूट्रिशन अमाउंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अप्रूव्ड पेटीएम। पेटीएम को किसके द्वारा अप्रूवल मिला कि वो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड में। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इनको अप्रूवल मिला। डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है कि किसी एक इंडियन कंपनी को एफडीआई मिला एंड उसको किसी दूसरी इंडियन कंपनी इक्विटी या कैपिटल में यूज़ किया जाए, उसको डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इशूड 6 नए रेगुलेशंस दैट आर रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स इन द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना एंड अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही रिसेंटली ये 6 नई गाइडलाइंस लाई गई एंड 1 अक्टूबर से ये गाइडलाइंस यहाँ पे लागू हो जाएंगी। नेक्स्ट, which bank has recently fined 2.68 crore rupees by RBI for contravention of certain provisions including opening of current accounts या फिर इंटरेस्ट रेट्स या डिपॉजिट एंड फ्रॉड क्लासिफिकेशन के लिए। तो किस बैंक पर यहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की गई, यूको बैंक पर। कितनी, 2.68 करोड़ रुपीज़। इसी के साथ साथ 2.1 लाख रुपीज़ की भी पेनल्टी इम्पोज की गई है किस पर, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर। केवाईसी की कुछ गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो नहीं की इसलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी यूएस डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन को फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन लॉन्च किया एट इट्स न्यूली ओपन ऑफशोर ब्रांच जो कि जिफ्ट सिटी में रहेगी। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ये याद रखेंगे आपका टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने यूएस डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है एनआरआईज के लिए, राइट। कहाँ पर, जिफ्ट सिटी में जो इनकी ब्रांच रहेगी। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू लॉन्च न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है इनकम सुरक्षा प्लान, करेक्ट। तो किसने लॉन्च किया, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया, करेक्ट। ये इनकम ये टैक्स फ्री ही नहीं है बट यहाँ पर आपको एनुअली कंपाउंड में मिलेगा ऑफ 5 to 6% जो कि एडजस्टेड है फॉर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, किस फिनटेक कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को इन पार्टनरशिप विद रुपे एंड येस बैंक लिमिटेड। तो वो कौन सा है, वो है पॉप टेक ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये इंडिया का पहला मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रहेगा। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम रहेगा स्पेशल केयर गोल्ड जो कि डिजाइंड है टू प्रोवाइड द नीड्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपका पहला ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो आईसीआईसीआई
आई करेक्ट माई सेल्फ, ये लॉन्च किया गया है स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इससे क्या है, जो ब्लाइंड पर्सन हैं उनको एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा, राइट। यहीं पे हम देखेंगे जो 18 से 65 साल के लोग हैं, करेक्ट, वो इस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। एंड ये पॉलिसी 1 साल का टर्म इंश्योरेंस देती है इंडिविजुअल कवरेज को, एंड 4 से 5 लाख रुपए का कवर भी मिलता है हेल्थ का। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किए 2 इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन, जो कि है यूपीआई एटीएम एंड दूसरा है भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, उसके दौरान इनको लॉन्च किया गया था। ये यूपीआई एटीएम क्या है, कार्डलेस विड्रॉल फैसिलिटी है एंड डिपॉजिट फैसिलिटी है, यूपीआई एप्लीकेशन से कर सकते हैं आप इसको। एंड भारत कनेक्ट ये आपका B2B प्लेटफॉर्म है, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर बिजनेसेस। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, उस फिक्स डिपॉजिट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पे इंटरेस्ट रेट 7.25% तक मिल जाता है। तो कौन सी फिक्स डिपॉजिट है? वो है स्टार धन वृद्धि। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पेमेंट्स हब पे सिक्योर डाटा, इंडिया यूपीआई हैज प्रोसेस नियरली कितना इन रुपीज इन ट्रांजैक्शन अप्रैल से जुलाई के बीच में, सरपासिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो इंडिया ने 81 लाख करोड़ रुपीज का ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो किया है बिटवीन यूपीआई की मदद से अप्रैल से जुलाई के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, विच फिनटेक स्टार्टअप पेमेंट गेटवे हैज रिसेंटली रिसीव फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई कि वो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, वो है पे शार्प। नेक्स्ट, अभी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने रीब्रांड किया खुद को एज व्हाट, खुद को एज अ जुरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के तौर पे उन्होंने रीब्रांड करा। नेक्स्ट, कौन है चेयरपर्सन ऑफ 22 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी जो फॉर्म की गई थी सेबी के द्वारा उसके? तो कौन है वो है रामा सुब्रमण्यम गांधी जी। एंड ये कमेटी लाई गई थी फॉर बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर टू सेबी ऑन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, लिस्टिंग एंड पोस्ट लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, हार्मोनाइजेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सो ऑन। नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को? तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन एटीएम इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है हिताची पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो किसने किया ये पार्टनरशिप की बात यहाँ पर? वो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया ऑनलाइन टूल जो कि है दावा सूचक। बेसिकली ये क्या है कि आपकी जो भी डिपॉजिटर्स की क्लेम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनको यहाँ पर वो अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, उस प्रॉब्लम को जो हमने रजिस्टर करी अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके यहाँ पे। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है दावा सूचक? ये लॉन्च किया गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा, DICGC के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है, किस पेमेंट फर्म ने रिसेंटली पार्टनर किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पे लिमिटेड के साथ, ताकि BBPS B2B प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो पेमेट वो आपकी पेमेंट फर्म रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसने अभी रिसेंटली वो पहला मेजर इंडियन बैंक बना जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल को ज्वाइन किया, PCAF को ज्वाइन करने वाला वो कौन सा बैंक बन गया है पहला? वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। और अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने भी इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, ये भी मार्क करेंगे। पहला तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी लॉन्च किया सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान को टू ऑफर अ ग्रोइंग इनकम स्ट्रीम फॉर रिटायरीज, राइट। तो वो कौन है? वो है एविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया है ये सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान को टू ऑफर ग्रोइंग इनकम स्ट्रीम फॉर रिटायरीज एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया एक बैंकरेंस पार्टनरशिप? बैंकरेंस पार्टनरशिप क्या होती है? एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी जब पार्टनर करते हैं, राइट। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने एंटर किया बैंकरेंस पार्टनरशिप को विद CSB बैंक लिमिटेड टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को? वो है किसके द्वारा यहाँ पे एंटर किया गया? कौन सी वो कंपनी रहेगी? वो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, RBI ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट किया दैट स्मॉल सेविंग प्लान्स, ये कितने % का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला स्मॉल सेविंग अकाउंट्स में, सेविंग प्लान्स में? 13.8% का। एंड सबसे ज़्यादा सुकन्या समृद्धि योजना एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में हमें ग्रोथ देखने को मिला है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को ऑफर किया जा सके टू द एग्जिस्टिंग DMI फाइनेंस कस्टमर्स। तो आरबीएल बैंक के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करके ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बांटने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू फंक्शन एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का यहाँ पे लाइसेंस मिल गया पे ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को। इससे क्या है, ये ऑनबोर्ड कर सकते हैं मर्चेंट्स को, राइट, सीमलेस पेमेंट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करा सकते हैं आपके बिजनेसेस को, एज वेल एज पे ग्लोबल ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस बिजनेसेस, ताकि बिजनेस में जो पेमेंट हो वो इजीली हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली रिलैक्स कर दिए नॉर्म्स फॉर द एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 500 करोड़ रुपीज टू बूस्ट द कैपेक्स दैट इज एस्टिमेटेड एट 11.11 लाख करोड़ रुपीज फॉर FY25। तो ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, नेक्स्ट, इन सितंबर आरबीआई ने क्लैरिफाई किया दैट द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, राइट, वो एलिजिबल हैं कि वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं फ्रॉम इंडियन बैंक्स, 3 इंडियन बैंक से, SBI से, HDFC से एंड ICICI बैंक से। लेकिन शर्त क्या है कि दे मस्ट बी रिजाइडिंग इन इंडिया ओनली, वो इंडिया में ही रह के यहाँ पे लोन ले सकते हैं एंड फिर वो बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारती एयरटेल, इन्होंने लॉन्च किया फिक्स डिपॉजिट सर्विस अंडर द डिजिटल फाइनेंस आर्म एयरटेल फाइनेंस, जो ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट रेट ऑफ अप टू कितना 9.1% का। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। पहला होमवर्क सेक्शन है, आप मुझे 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताओ लास्ट वीक के जो आपको समझ आए हो, जो चीज आपको याद हो। दूसरा, आप मुझे एक टॉपिक बताओ ऐसा, हर बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है जिनको वो टॉपिक समझ ना आया हो, किसी भी फील्ड में हो, वो किसी भी टॉपिक का हो, राइट, तो आप वो मुझे बताइए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा सेशन। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर हम डेली बेसिस पे सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं आपकी लर्निंग के लिए, ताकि बच्चों आपका एग्जाम क्लियर हो सके।